Lá no quarto, tomando tá bom no rabo. Tal do TBT, das bucetas de mel. Hoje você fode com a tropa da Chucabel. Dime lo que quieres, pode com a tropa da dime lo que quieres, tropa da Chuca, pode com a tropa da dime lo que quieres, dime lo que quieres, que quieres, dime lo que quieres, dime lo que quieres. O TBT que ele quer, claro que pode ser postado. Eu de quatro lá no quarto, tomando tá bom no rabo. Tal do TBT, das bucetas de mel. Hoje você fode com a tropa da Chucabel. Ninguém me forçou, eu vim pra safadeza. Eu tô na treta de abate, só pra dar buceta. Ninguém me forçou, eu vim pra safadeza. Eu tô na Dime lo que
You know, there comes a day, man. Everyone's gonna have this day. There comes a day where being average, being mediocre is just sickening to you. It's just sickening. It makes you want to throw up. Because you've seen people with far less talent than you. As you're growing up with them, their childhood buddies, whatever else, they didn't have what you had. Yet now they're fucking to become something that you haven't. There comes that day. It's either when you're young, you know, and it strikes you on the baseball field because you're sick of striking out, or it's when you get fired from your 5th job, you know, and your wife and kids are on your ass because you don't know how to support them anymore. There comes a fucking day where push comes to shove. Where being mediocre and being like average and shit just fucking burns and sucks so much. You can't deal with it one more day. And you get off your fucking ass. And you create something that's always been there. It's always been inside of you trying to come out. But you've never wanted to unwrap it because it's too much fucking pain and commitment. You were scared you were gonna fail. You were scared if you started, you never finish it. You didn't want to tell anyone about it. You knew it was there, but you never wanted to embark on it. Until something fucking hits. You get fired or somebody else gets success, reminds you of what you could have been. And then that fucking spark is born. And no matter what happens, I'm never gonna be in this boat again. अयो शिट क्या हाल है इट हैज बीन आई गेस या तो इट हैज बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस वी टॉक है ना ऐसे वाले फॉर्मेट में जनरली इट जस्ट यू नो कि मैं जिम गया वर्कआउट किया एंड थोड़ा बहुत आजकल मैं ये आई डोंट नो मेरे इसमें क्या कितना स्पेस है अभी भी ठीक है तो आई ट्राई टू कीप इट समहाउ शॉर्ट ठीक है समहाउ बट या थोड़ा पूरे वीक का मेरे को आई थिंक रिकैप देना चाहिए ठीक है लाइक हाउ हैज़ बीन माई ट्रेनिंग सिंस लाइक पास्ट 2 weeks ठीक है I'll tell you this, जब से ये सिंगल्स वाला हुआ है मेरे को थोड़ा सा अपना मेंटली अपने आप पे डाउट होना ज़्यादा हो रहा है चीज़ों के बारे में ठीक है लाइक मैं वेट्स में मेरे को अपने आप पे बहुत वेट मारने में मेरे को बहुत अपने आप पे सोचना पड़ता है बहुत ज़्यादा मतलब मैं लाइक मेरे जो दोस्त हैं मैं उनसे कॉल पे बात भी करता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में कि इवन लाइक कि मैं वर्कआउट के पहले मतलब मैं जिम पहुँच गया हूँ जिम के सामने मैं खड़ा हूँ एंड मैं अपने दोस्तों को पहले कॉल करके उनसे वो ले रहा हूँ आई डोंट नो व्हाई मैं अपने ऊपर ये वाला इवन दो मैं तुमने जैसे देखा पिछले लाइक पास्ट 2 months मैंने बहुत अच्छे से मारे भाई सारे वेट सारे बैक डाउन वेट सब में मैंने इसकी आँख अपने खींची है बट आई डोंट नो लास्ट 2 weeks से मेरा ये सिंगल्स वाले ब्लॉक में मैं थोड़ा सा पता नहीं मतलब सच बोलो तो मैं हग ही रहा हूँ लाइक पिछले हफ्ते वाला 225 तुमने देखा उसमें मैं आई थिंक मेरे जब मैंने ड्राइव इन किया तो मेरे सही हुआ मैं 0.5 सेकेंड्स के लिए 0.5 सेकेंड्स के लिए मैं पूरा स्ट्रेट खड़ा था मैं वो होल्ड नहीं कर पाया मेरे घुटने बेंड हो गए ठीक है देन फिर क्या कहते हैं लाइक स्क्वाट्स में मैंने इस हफ्ते थोड़ा स्क्वाट सही गई है बेंच भी सही जा रही है बट समहाउ डेडलिफ्ट हैज टेकन द हिट ठीक है आई गेस ये वही बात है कि तुम एक बारी में तुम्हारे तीनों लिफ्ट सही से नहीं जाएंगे है ना चाहे तुम स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट किसी में भी है ना ऐसा नहीं होगा कि 3 के 3 सही जा रहे हो तुम बेंचों बढ़िया जा रहे हो प्लस मैं मोस्ट प्रोबेबली शायद नेक्स्ट मंथ इन लाइक जुलाई में मेरे को कहीं निकलना है ठीक है इट इज़ इन यू नो तो तुम्हें थोड़ा सीनरी चेंज मिल सकता है उसमें तो या
दैट्स दैट। मैं वो चीज़ तो मतलब मैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे कभी, है ना। एक बार वो हो जाए भोसड़ी के, हाँ, उसके बारे में एक बार वो हो जाए मेरा क्लियर, देन आई यू नो लेट यू नो गाइस नो अबाउट व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन माई लाइफ, ठीक है। क्योंकि आई थिंक मेरे को वापस से ये वाला शुरू करना चाहिए कि मैं हर इधर लाइक हर सेशन के बाद या फिर अपना हर सेशन के बाद मेरे को ऐसा ही करना चाहिए कि मैं थोड़ा अपने तुम लोग से बात करूँ चीज़ों के बारे में, है ना। लाइक आई टॉक अबाउट हाउ आई फेल्ट एंड दिस एंड दैट, बट ठीक है यार, कभी कभी नहीं होता अपने से, चलता है इतना तो, है ना। सो या दैट्स दैट। बाकी हाँ, तो बेंच बहुत तगड़ी जा रही है भाई। आई डोंट नो हाउ अचानक से मेरी बेंच एकदम ऐसे ड्रास्टिकली मेरे आ रहे हैं, बढ़ रही है अचानक से, जो मेरे को खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतना अच्छे से मार पा रहा हूँ। लाइक इफ यू सी लास्ट वीक 110 बहुत स्मूथ, इस हफ्ते भी 115 जो मारा मंडे को बहुत तगड़ा गया। कल मेरा बेंच का सेशन था, वो मेरा प्राइमर सेशन था, जिसमें मैंने कल अभी मैं इसके बाद ऐड कर दूंगा, ठीक है, ये पूरा अपने रंडी रोने के बाद, ठीक है। एक 110 थोड़ा सा स्लो है, मोस्ट प्रोबेबली मंडे का फटीक था, और ये गर्मी एज यू नो गाइस फरीदाबाद में, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ, फरीदाबाद में गाड़ मार रखी है, ठीक है। 40 डिग्री पार रोज टेम्परेचर हो रखा है इस हफ्ते, एंड समहाउ मेरी बॉडी ने वो हिट कर लिया उसको, ठीक है। आज मैं लिटरली मैं लंच करने के बाद में मेरे से ऐसा लग नहीं रहा था कि मेरी बॉडी सही से है कि नहीं है वाला। दैट्स वाई मैंने तो, क्योंकि तुमको पता है यार, अगर मैंने वो वेट फेल किया आज, मोस्ट प्रोबेबली उसके चांसेस दो ही चीज़ें कि या तो मेरी बॉडी फटीग्ड है पूरी, कुछ ज़्यादा ही फटीग है, even though I kind of didn't push myself on Tuesday, ठीक है। Like हाँ, मैंने 205 की स्क्वाट मारी है ट्यूसडे को, बट मैंने वो अपने आप को उसमें नहीं खींचा, बैकडाउन सेट में मैंने नहीं खींचा अपना को, बहुत लाइट मेरे बैकडाउन सेट्स थे। लाइक मैंने अपना जो मेरा डबल्स का बैकडाउन होता है वो मैंने पूरा स्किप करके 120 पे 4 एंड 130 पे 4 मैंने जो मारा है वो है। सो वेल दैट्स दैट, ठीक है। सो आई डोंट नो क्या होगा अभी, है ना। मेरे को थोड़ा सा किन किन चीज़ों पे मेरे को अपना ध्यान देना पड़ेगा करंटली। हो सकता है या तो न्यूट्रिशन है या कुछ है, मेरे को नहीं आइडिया यार, सच बताऊँ, बिकॉज आई हैव बीन ऑन ट्रैक विद माई शिट। हो सकता है कि मैं ये अभी मतलब ओलंपिक्स चल रहा है पावर लिफ्टिंग का, ठीक है, ये पूरा वीक, तो मैं वो देखने में बिजी था पिछले 2-3 दिन से। रोज़ भाई रात को मैं देख रहा हूँ भाई, शिद्दत से मैं देख रहा हूँ। 59 3 दिन से, मतलब 59 का हो गया, ठीक है, कल 66, उसके बाद 83, कल 83 का 83, परसों फिर कल 93 का, आज 105 का है। जो मेरे को स्पेशली देखना है, बिकॉज इफ़ यू नो USA का जो पावर लिफ्टर है एंथनी मैकनॉटन, ही इज़ अ वेरी बिग, ही इज़ अ बिग नेम इन लाइक USA, ठीक है। PA नेशनल जीता बंदा, ठीक है, पावर लिफ्टिंग अमेरिका नेशनल, ठीक है। बहुत अच्छा उसका वो था, ठीक है, बहुत अच्छे से उसने वो मतलब करा है उसमें। सो आई एम काइंड ऑफ सपोर्टिंग हिम दिस टाइम, बट एज 105 हमारे पुराने जितने भी जाइंट्स हैं तो वो भी हैं, द OGs ऑफ 105, एनाटोली हो गया, ठीक है, वो है इस बार। तो इट्स अ बिग फाइट है। प्लस कल 120s है और उसके बाद 120 प्लस, ठीक है। ये दो होने में देखना क्यों बहुत तगड़ा, क्योंकि 120s में वी हैव सो मेनी बिग पीपल, है ना। बिकॉज द मेन रीजन आई वांट टू सी 120s, ठीक है, इज बिकॉज दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू सी SSJ बॉब, ठीक है। आई एम अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ दैट गाय, ठीक है, बॉब मैथ्यूज। आई लव हिम, द मेंटालिटी द गाय हैज शोन, the mindset he has, everything, the lifts, it's like a piece of art, okay. He's the most consistent and dedicated guy, even though everyone knows that since last 2 months
he hasn't posted any updates regarding his training and all. And I have talked to him on DMs and all for a while, trying my best to, you know, push him to maybe post something, maybe, you know, maybe a little, what do you say, like before World Games, like in Shanghai. Before that, I want him to, you know, sprinkle some salt on everyone, maybe, because like there is so many, you know, I saw a video, someone was even saying that he died. Like, what the fuck, man? That cannot happen, you know. That's it's a, like, you know, what can we say? Someone said he is injured. Maybe not, because from what I heard a while ago, he wanted to do PA Nationals, but 1 second. Yeah, so he wanted to do PA Nationals, but at the end, when he got to know that Rondell Hunt was participating, but maybe not, he missed it, or there are so many, you know, speculations about it. But what can we say? We'll only see him either if he posts something, you know, some you know, big updates after this Worlds. Maybe, because if I, you know, see to it, if he did a triples block, then doubles, and if he's in singles, okay, and so most probably we might see in in 1 month we might see any update, because if he hits his singles right now, then that's good, man, you know, because he has to check if from what I think, he is increasing his body weight consistently, not, you know, rushing it. As a 120, he is trying to fill it out here and there. I saw some influencers video, he was there, okay, and from the face of it, his face looked like kind of a guy who was going in the 120s, okay, I'll tell you this. Maybe he's around 110 or 115, okay, that's what I'm thinking right now, 110, 115. If he does max out 120, it might be because of a, you know, he might have, you know, did some dirty bulking here and there. So yeah, that's that. But right now, I just, you know, I want to see an update from that guy. And 120 plus, well, we have so many monsters there. So yeah, 120 plus has too many monsters, man. It's too many. Jesus Oliveira, okay, that junior guy from last year. I have been seeing his training for a while, okay. How he trains, you know. His training has been, you know, something I cannot even, you know, think about. Like 370 kgs for singles or doubles, but he had like 10 sets, okay. 10 sets, 10 fucking sets. I don't know, man. What the fuck is that guy thinking, okay, at this point? So yeah, so let's see what is gonna happen, okay. And अभी मैं भी अपने घर पहुंच गया हूँ. I also reached my house, so I have to park and all. But yeah, today has been a shit show for me. But I am kind of, you know, chill about it. After my sessions, I don't overthink that much these days, okay. So yeah, let's see how we do, okay. How this, I'll tell you this, like PA Nationals went last month. We had India Nationals, okay, the people who won in 83s, 93s, 74 वगैरह वगैरह, you know, and 105 Rishi, all of these guys going in World Games, you know, 8 weeks. 66 we have at Shivam, okay. 74 we have Yash Parab. 93, oh my god, Parth, damn bro. 329. Then we have 105 Rishi. 120 plus we had Hardik. Hardik is a monster, man. Like if you see on Instagram, if you follow him on Insta, so like in so many people in India are, you know, coming up these days, doing so much, giving so much time to this game. So it's, you know, because if you see to it, we didn't have that many people in like last 2-3 years, you know.
powerlifting has been a sport which has grown so much in past 2 years. Not only that, like in last month you saw when the SBD dropped the new Aspire collection, we saw Mr. Rajat Rawat. Mr. Rajat Rawat, man, the GOAT, okay, the GOAT. He finally got, you know, recognized by SBD, and it's a huge thing if you know, because everyone, you know, every powerlifter wants, you know, either SBD to send them a package or, you know, get a SBD like singlet. I haven't bought a singlet, okay. I have been powerlifting since like 1 year, okay. I started last year in June, last year in February, okay. So I haven't bought a singlet. I want to, you know, but right now I don't feel, what do you say, like compelled to buy it or deserving to, you know, get a singlet. I feel like my total is not to that point, you know. I am right now, my body weight is around 109, 110, okay. It has been fluctuating like that, and this is after getting my breakfast, lunch, and a pre-workout meal, okay. After all these three things, my body weight is around 110, okay, currently. I will, you know, after this like block, like next week, week 4, maybe I'll start, you know, do a mini cut, or, you know, like I'm kind of, you know, I have been tracking my calorie intake for a while. Right now it's around 3,000 to 3,300, 3,000, between, it has been fluctuating up and down, but it's around 3,000 and 3,200 or 3,300, okay. Like past 1 month I have been doing it, so that's that. But yeah, I have to, you know, see what I have been, you know, choking myself on. Either maybe because my muscle, I didn't feel that like I don't know what happened today, okay. I'll, like, let me cut to the chase, okay. I don't know, maybe the quads are fatigued from, you know, to my Tuesday session. Either that, or maybe I pushed a little hard yesterday during my rest day. I didn't push myself in the cardio session yesterday, so I did, so that's that, okay. But it's okay, man, it's okay. Like for me, I feel like it's, even though I am failing last 2 weeks, I know that when this, you know, next week, when if I Monday primary session, bench, Tuesday is my primary squats, and Friday is my primary deadlift, okay. So if I take myself, you know, I'll recover. I have to, you know, be focused a little more, okay. From what I see, I have to be patient with this shit. So yeah, that's that. So, and I have also reached home, okay. So we'll see, you know, we'll see what happens, okay. Like we'll see. But next week, no, man, I won't fail this time, man. Like my current maxes were before my, you know, building block, my volume and all. My current max, one rep maxes are 235 deadlift, 125 bench, and 205 squat. I wanted to hit all 3 of them this week only, you know. I wanted to hit them so that I could, you know, get a momentum for next week. But it's okay, I did a good session, you know. 115 is a good bench from, and 205, I don't know how I squatted 205, man, this week, like that smoothly. I felt it too smooth, okay, I'll tell you this. So it's okay, man, like we'll see to it. I'll recover. Like we have, tomorrow is Saturday and Monday. I'll try my best to put this vlog out by Monday or Tuesday, okay. So I have been a little inconsistent with this, like what I'll tell you, it's my fault, okay. So yeah, that's that. So yeah, we'll see, man, we'll see this time. We'll see to it. So take care. अंकल मैं ही बैठा हूँ. So yeah, we'll see to it. So yeah, take care, bye bye, and
पीस आउट।